सीसीआई की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कंज्यूमर अधिवेशन एर्नाकुलम कोची में हुआ संपन्न। देश के विभिन्न राज्यों से 150 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल। कोटा निवासी प्रदेश महासचिव राजस्थान ज्योति गौड़ एडवोकेट ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण के सबसे बड़े नेटवर्क कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई की ओर से नौसर इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में उपभोक्ता आंदोलनकारी संगठन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन केरल के कोची शहर में हुआ संपन्न। Is it the benefit of such person who needs the maximum benefit of Consumer Protection Act? As we know, more than 60% people of India lives in the villages, and the situation of villages is, after independence of 75 years, yet not good, and exploitation, especially through spurious and false products, is happening in the most of rural areas more than urban areas. Dear friends, I am also thankful to Mr. Matthew that he arranged live telecast of this session, not only this session, but completely 2 days of the national convention. And it will be benefited for such persons who cannot attend this convention due to some other problems. It's time of festive, it's time season of the tourists. So there is problems in the bookings of railways, the fares of airport is high, and availability of seats is difficult. So some persons who couldn't join physically will take benefit through the online YouTube channel. I also thanks to our technical team who is supporting for this facility. Presently, I think various languages non-peoples are here. But due to the telecast of the session of the YouTube, I think that the most of part of the country, Hindi is a well accepted language. So I want to speak in Hindi also, so I can connect the people of the country through the telecast and or YouTube channel. साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के परिवार के साथ इस कमेटी के साथ जुड़ने के लिए। Consumers Confederation India is the biggest network of Indian consumer organization. It is not only the biggest network of voluntary consumer associations of country, it is the only hope of Indian consumers, because there is no other network is working to protect the rights and to consumers and to change the policies at the central government level. Now, I am very happy. मेरा ये मानना है कि ये सफलता कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन बनाने की सफलता आप लोगों के प्रयासों से। यदि आप लोगों ने इस आंदोलन में इस भूमिका को नहीं निभाया होगा, तो आज गर्व के साथ मैं ये नहीं कह सकता था कि वी आर द बिगेस्ट वन। सो ये प्राउड लेने का ये मौका आप लोगों ने जो दिया है हिंदुस्तान में मुझे, वो आपने दिया है, और उसके लिए धन्यवाद देने के लिए वो थैंकिंग, इससे बेटर हमारे पास दूसरा मंच